हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अनिसोल दैट इज एरोमेटिक ईथर अनिसोल उसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसके अंदर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसके लिए हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अनिसोल जानना जरूरी है. सो हाउ दिस अनिसोल रिएक्ट्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स, उसको जानने के लिए resonance structure of anisole. So let us take this is the anisole. इस anisole के अंदर carbon, hydrogen, oxygen and methyl group is there. In this, oxygen has lone pair of electron. This oxygen has lone pair of electrons. If these lone pair of electrons are shifted, अगर ये lone pair of electrons यहाँ पे shift हो गए, क्या होता है? So oxygen has double bond with this carbon of benzene. ठीक है? So this double bond is shifted towards next carbon atom. So this carbon atom gets extra electrons, so it gets negative charge, and oxygen gets positive charge. ठीक है? So ये जैसे थे वैसे ही है. तो इस पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अराइज हो रहा अनिसोल के ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ these electrons are shifted here, this extra electron is shifted with this carbon, so what happens here? Double bond comes here, already double bond is there, so these electrons will move towards next carbon atom. So this fourth carbon atom gets partial negative या negative charge. Oxygen has positive charge. Okay, so और भी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, if this extra electron will be shifted here, so here is a double bond, this comes here to form double bond on this position. So these double bonds will be moved towards next carbon atom, so this sixth carbon atom will get negative charge, or else you can also say this is ortho position, so oxygen has positive charge. Okay, so वैसे और भी देखेंगे तो if these extra electron are shifted here, so here it will be double bond, here double bond, here double bond. So यहाँ पे जो double bond था, यहाँ पे भी है double bond, यहाँ पे भी है. This double bond comes here, मतलब bond. So one more bond comes here to get, so here it will be lone pair of electrons on oxygen, जैसे इससे पहले लिए थे उस तरह ऑक्सीजन lone pair of electrons आते. So finally देखिए, इन सबको देखने के बाद अनिसोल, this is anisole OCH3. On this anisole, on second position there is a partial negative charge. So on fourth position there is a negative charge. There may be negative charge. On sixth position there may be negative charge. Ortho meta positions. Okay, second, fourth and sixth. Conclusion is that from this resonance structure, anisole is ortho and para-directing group. Ortho and para-directing. This is also ortho. Ortho and para-directing group for electrophilic substitution reaction. अगर electrophile अनिसोल के साथ रिएक्ट करने के लिए आ रहा है, तो अनिसोल जो है ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और पैरा पोजीशन पे अटैच कराता है, मेटा पोजीशन पे नहीं कराता. और इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों होते, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं होते? देखिए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अराइज हो रहे जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अच्छा है. न्यूक्लियोफिलिक है तो यहाँ पे रिपल होते, तो इसीलिए अनिसोल अंडरगोस electrophilic substitution reaction, and anisole is a ortho and para directing group for electrophilic substitution reaction. जैसे इससे पहले आप क्लोरोबेंजीन के लिए पढ़े हैं, फिनॉल के लिए पढ़े, वैसे anisole is also ortho and para directing group. So let us go with the next concept based on this resonance structure. So let us go with one by one electrophilic substitution reactions of anisole.
जिसके अंदर फर्स्ट वन हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन. Okay, bromination, addition of bromine to so this anisole. So let us take anisole, methoxybenzene. It is also called as methoxybenzene, OCH3. This is anisole. When this anisole is treated with bromine, okay, so what happens? So out of these two bromo, one will be Br plus, one more will be Br minus. So this electrophile attacks on anisole. On which position it can attack? One bromo electrophile can be attached on ortho position. So here it will be Br. Here already OCH3 is there. So Br will be attached. So H is replaced by Br plus. So that H plus with Br minus to form HBr. So if you take 2 times Br2 and 2 times anisole, one more product will form. So that product is so here it will be OCH3. So bromo will be attached on 4th position. Okay, so Br minus with one more H from here to form HBr. 2 times HBr. Here I will write 2HBr as a byproduct. Okay, 2HBr as a byproduct. What are the names of these things? So this is ortho bromo anisole, and this is para bromo anisole. Okay, so what we have to say in words means when anisole reacts with bromine, it forms ortho bromo anisole and para bromo anisole, because this anisole is ortho and para directing group for electrophilic substitution reaction. Don't write meta bromo. Don't write bromo is on meta position. Don't write meta bromo anisole. Meta bromo anisole will be not formed. Okay, so that's about the bromination of this anisole. Let us move towards the next reaction, that is nitration. Nitration of anisole. Okay, so for nitration we have to take nitric acid HNO3 in the presence of concentrated sulfuric acid H2SO4. Okay, so what will be the product? So I will use the same thing here. So from this HNO3, OH minus and NO2 plus. This NO2 plus is an electrophile which attacks on anisole, which can be bonded on ortho position of anisole. So here it will be NO2. NO2 is on ortho position, yeah, second position. If you take 2 times HNO3, so one more NO2 nucleophile can be attacked on 4th position of anisole. So remaining OH with H and H forms H2O, that is 2 times H2. H2O 2 times will be the byproduct. What is its name? इसका नाम जो है orthonitro anisole. This is para-nitro anisole. Okay, so what we have to say in words means when anisole reacts with nitric acid in the presence of sulfuric acid, or anisole undergoes nitration, it forms ortho-nitro anisole and para-nitro anisole. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. ऑर्थो-नाइट्रो अनिसोल और पैरा-नाइट्रो अनिसोल्स फॉर्म होता बोल के आप क्या करना, लिखना. ओके, सो और भी आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation में क्या करते, अल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, हमें ऐड करते अल्काइल हैलाइड. ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3Cl अल्काइल हैलाइड. दिस reaction undergoes in the presence of anhydrous
अल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होता है. So in this CS3Cl, methyl chloride, this is called methyl chloride. Methylation of anisole भी बोल सकते हैं. Alkylation मतलब methylation, methyl chloride. So CS3Cl, in this CS3 plus will be there, Cl minus will be there. Electrophile is CS3 plus, which attacks on ortho position of this anisole, CH3. Okay. So if you take 2 times CS3Cl methyl chloride, one more CS3 plus will be attached on 4th position, that is CH3. So remaining the Cl minus combines with H plus to form HCl as a byproduct, that is 2 times HCl as a byproduct. Okay. So name क्या लिखना है? देखिए नेम अगर ये नहीं रहा तो ये टॉलिन, अगर ये है तो अनिसोल. इसमें प्रेफरेंस अनिसोल को देना पड़ता है. ये मिथाइल है, ऑर्थो मिथाइल anisole, and this is paramethyl anisole. Paramethyl anisole. So how anisole reacts with methyl chloride? How anisole reacts with methyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride means, so when anisole reacts with methyl chloride, undergoes methylation to form orthomethyl anisole and paramethyl anisole. Orthomethyl anisole और paramethyl anisoles form करते. ठीक है. So let us last one, Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation of anisole. Acylation के लिए देखिए हम ले रहे acetyl chloride CS3COCl, acetyl chloride acylation. So in this acetyl chloride देखिए CS3CO positive and Cl minus negative. If it will be split up into 2 things. So इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन? CS3CO जो इस अनिसोल पे अटैक करता है. अनिसोल पे अटैक करता है. ओके. सो कहाँ पे अटैक करता है? CS3CO plus will be attacked on ortho position of this anisole. So that is COCH3. So याद रखिए CO will be bonded with benzene ring and CS3 is with CO. CH3CO benzene ring CH3O. So difference है देखिए, दोनों सेम नहीं है, अलग है. So methyl oxygen benzene, methyl carbonyl and benzene. Okay. So if you take 2 times ले लिए तो one more electrophile will be attacked on 4th position, that is CO, CH3. CO is bonded with benzene. CH3 is with CO. Don't write like this. So CH3 CO अगर लिखेंगे तो गलत हो जाता देखिए. So that is CO is bonded with CH3. So the Cl minus combines with H from here, H from one more anisole to form HCl 2 times HCl. What is its name? अब इसका नाम क्या है वो जरूरी है, नाम बोलना. यहाँ पे देखिए ये अनिसोल है, अगर ये नहीं रहा तो ये एसिटोफिनोल है. सो एसिटोफिनोल है, बट प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर दिस. इसको प्रेफरेंस देना, इसको नहीं, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाता एसिटोफिनोल. ओके. कैसा एसिटोफिनोल? ये ऑर्थो पोजीशन पे O methoxy. This is methoxy acetophenone, and this is paramethoxy acetophenone. Okay. So orthomethoxy acetophenone and paramethoxy acetophenones are formed. So when anisole undergoes Friedel-Crafts acylation, means that is reacts with acetyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, it forms the mixture of ortho and para methoxy acetophenone, or ortho methoxy acetophenone and para methoxy acetophenones are formed. So that is Friedel-Crafts acylation. ये थे Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, bromination, nitration. ओके. ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अनिसोल थे, इनको प्रैक्टिस करिए. सो दैट्स अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अनिसोल and electrophilic substitution reactions.
ओके, ये था। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आगे और भी आएंगे।